Hello students and welcome to Vidya Mandir classes. I'm Sanjana Jain, your botany faculty. So in the last class we started with the chapter respiration in plants. हम लोगों ने डिस्कस किया था कि what is actually respiration, plants कैसे respire करते हैं, और respiration के दो types aerobic और anaerobic respiration की definition we discussed. Then we started with glycolysis. Okay. Today we are going to deal with कि अगर एक बार ग्लूकोज दो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाए तो उसके बाद पायरुवेट का फेट क्या होता है. What will pyruvate be converted into further, like whether it will go undergo anaerobic respiration or aerobic respiration. So today we are going to discuss that. It is a very important topic. हर बार नीट एग्जाम में एक से दो क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं. So stay tuned. Okay, so let's start with our today's topic. First of all, let's put down the name of the chapter. That is respiration in plants. हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि ग्लूकोज दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट होता है वाया द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, राइट. वी हैव डिस्कस दैट कि ग्लूकोज जो 6 कार्बन का कंपाउंड होता है that gets converted into two molecules of pyruvate. Two molecules of pyruvate जो 3 कार्बन का कंपाउंड है by the process of glycolysis. ठीक है. नाउ जो ये पायरुवेट या पायरुविक एसिड बनाए इसका फेट क्या होगा, इसकी किस्मत में क्या लिखा है, इसका फेट क्या होगा. It depends upon कि whether oxygen is available or not. अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा. एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है फर्मेंटेशन होगा. Fermentation is of two types: alcoholic fermentation and lactic acid fermentation. अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, if oxygen is present, अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो उस केस में क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन में लिंक रिएक्शन होगा, क्रेब्स साइकिल होगी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट fermentation, link reaction and Krebs cycle today. So let's start with anaerobic respiration first. So in anaerobic respiration, we are going to discuss about fermentation. फर्मेंटेशन फंजाई और बैक्टीरिया में होती है, कैरिड आउट बाय प्राइमरीली बाय फंजाई एंड बैक्टीरिया. दो टाइप्स की होती है, आई टोल्ड यू. वन इज alcoholic fermentation, other is lactic acid fermentation.
lactic acid fermentation. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, पायरुवेट अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है. सो लेट्स राइट इट डाउन. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है यीस्ट में, इट अकर्स इन यीस्ट. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अकर्स इन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, दो स्टेप्स होते हैं. पहले पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन का कंपाउंड है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिटाल्डिहाइड and carbon dioxide in the presence of enzyme pyruvic acid dehydrogenase. Pyruvic acid dehydrogenase. उसके बाद acetaldehyde gets converted into, acetaldehyde is 2 carbon compound, it gets converted into ethanol. Alcohol में convert हो जाता है and it is occurring in the presence of alcohol dehydrogenase. इस पूरे टाइम के अंदर मतलब पूरे प्रोसेस के अंदर 2 NADH are used and they are converted into 2 NAD. तो मतलब ग्लाइकोलाइसिस में आपको पता है कि 8 ATP नेट ATP गेन था, तो 8 का मतलब हो गया, अगर 8 में से 2 NADH हटा दिया तो 2 NADH इज इक्वल टू 2 into 3 6 ATPs. तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एक ग्लूकोज की अगर आप बात करो तो अल्टीमेटली वो जब वो कन्वर्ट हो रहा है, तो देखो क्या होता है, एक पायरुविक एसिड एक इथेनॉल बनाएगा. तो जब 2 पायरुविक एसिड होंगे ग्लूकोज में तो 2 इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स बनेंगे और इस कन्वर्जन में 2 NADH यूज होंगे. ठीक है, तो नेट ATP गेन कितना हो गया, 2 ATP. ठीक है, नेक्स्ट इज लैक्टोबैसिलस में जो होता है वो होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, pyruvic acid gets converted into lactic acid. Pyruvic acid भी 3 कार्बन का कंपाउंड है और lactic acid भी 3 कार्बन का कंपाउंड है. This conversion takes place in the presence of lactic acid dehydrogenase enzyme. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ग्लूकोज कन्वर्ट होता है 2 पायरुवेट में, तो 2 पायरुविक एसिड विल फॉर्म 2 लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल. इस टाइम पर 2 NADH यूज होते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं 2 NAD प्लस में. तो यहाँ पर भी नेट जो गेन हुआ ATP का ग्लाइकोलाइसिस से लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन तक वो हुआ 2 ATPs का, क्योंकि 2 NADH तो यूज हो गए हैं. So this was all about anaerobic respiration. Next, we are going to discuss about aerobic respiration. So let's put down the heading. Okay, so now let's proceed for aerobic respiration. Put down the heading. Aerobic respiration. Aerobic respiration में क्या होता है, देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है. हमने देखा था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में या फिर ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है. एरोबिक में देयर इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज.
So let's write it down. Write it down. There is complete oxidation of glucose. एनर्जी एक्सट्रैक्शन, एनारोबिक रेस्पिरेशन या फिर आप ग्लाइकोलिसिस की बात करते हो तो कम होता है, तो लेस एटीपीज आर फॉर्म्ड इन द केस ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन. बट व्हेन यू टॉक अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन, एटीपी एक्सट्रैक्शन या एनर्जी एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है. सो यू कैन राइट डाउन दिस पॉइंट. कंप्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एक्सट्रैक्ट एनर्जी stored in glucose to synthesize large number of ATPs. If you talk about eukaryotes, तो eukaryotes के अंदर aerobic respiration mitochondria में होता है. So you can write down the site of aerobic respiration in eukaryotes is mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन होता है. तो अब ये एक सेल में आपको बना के दिखाती हूँ. सपोज दिस इज अ सेल. सपोज दिस इज अ सेल. ठीक है. अब इस सेल में दिस इज द साइटोप्लाज्म. ये साइटोप्लाज्म हो गया. This is cytoplasm. अंदर यहां पर ही आपके पास है माइटोकॉन्ड्रिया. This is the mitochondria. तो होता क्या है कि साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है ग्लाइकोलिसिस. ग्लूकोज. तो होता क्या है, सेल के अंदर ग्लूकोज जो 6 कार्बन का कंपाउंड है वो कन्वर्ट होता है 2 पायरुवेट में साइटोप्लाज्म के अंदर बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस. अब ये पायरुवेट जो है ये पहले जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके पहले ये पायरुवेट लिंक रिएक्शन. तो लिंक रिएक्शन क्या होता है? लिंक रिएक्शन एक गेटवे रिएक्शन है जो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को लिंक करता है. तो यहाँ पर पहले हुआ लिंक रिएक्शन, उसके बाद होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ही क्रेब्स साइकिल. और ये दोनों ही पार्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन का. उसके बाद जितने भी NADH बने हैं, जितने भी FADH2 बने हैं, वो सारे के सारे ATP में कन्वर्ट होते हैं वाया ETS. ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लिंक रिएक्शन. सो पुट डाउन द हेडिंग लिंक रिएक्शन. Put down the heading link reaction. लिंक रिएक्शन को ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन भी बोला जाता है. उसको गेटवे रिएक्शन भी बोला जाता है बिकॉज इट एक्ट्स एज अ गेट जो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को लिंक करता है. इस रिएक्शन में क्या होता है? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोए.
फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो होता क्या है एक्चुअली में, आई जस्ट मेक यू राइट द रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। होता क्या है, पायरुवेट या पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है। इट कंबाइंस विद कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए के साथ कंबाइन करता है। एनएडी की प्रेजेंस में गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोए, जो 2 कार्बन का कंपाउंड है, और इस टाइम पे CO2 बाहर रिलीज होती है। NADH बनता है और H+ रिलीज होता है। ये पूरा प्रोसेस हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ Mg2+ एंड पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। तो बेसिकली जो 3 कार्बन का पायरुवेट है वो अल्टीमेटली एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा, तो एक कार्बन कम हो गया, तो देन इट विल फॉर्म अ 2 कार्बन कंपाउंड दैट इज acetyl CoA. So in this reaction, acetyl CoA, a 2 carbon compound, is formed. So this was the first step of aerobic respiration. ठीक है, फर्स्ट स्टेप था एरोबिक रेस्पिरेशन का। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द सेकंड स्टेप। पहले मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ सेकंड स्टेप के बारे में। सेकंड स्टेप इज एक्चुअली ग्लाइकोलिसिस, सॉरी क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। It is also called as citric acid cycle. अब जितने भी NADH, FADH2 बने हैं इन फ्रॉम द ग्लाइकोलिसिस टू क्रेब्स साइकिल, वो सारे के सारे कन्वर्ट होते हैं ATPs में वाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो थर्ड स्टेप वही है आपका, थर्ड स्टेप यही है आपका। उसमें क्या होता है, देयर इज passing on of electrons, passing on of electrons removed as part of hydrogen atoms to molecular oxygen. Passing on of electrons removed as part of hydrogen atom to molecules, to molecular oxygen आप कह सकते हो, with simultaneous synthesis of ATP through ETS. तो ETS के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते रहते हैं और हाइड्रोजन आयंस पास होते हैं ऑक्सीजन के पास, और फाइनली उस टाइम पर क्या होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है with simultaneous synthesis of ATPs through ETS. इस ETS के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल। citric acid cycle or Krebs cycle or tricarboxylic acid cycle. So put down the heading, TCA cycle, जिसका फुल फॉर्म हो गया tricarboxylic acid cycle. TCA cycle or Krebs cycle.
ये साइकिल डिस्कवर की थी हेंस क्रेब ने, तभी इसका नाम हुआ क्रेब्स साइकिल। और इस साइकिल में काफी सारे कंपाउंड जो बनते हैं उसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होते हैं, 3 कार्बोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, तभी इस साइकिल का नाम हो गया ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। सो राइट इट डाउन। Write it down. Krebs cycle was discovered by Hans Krebs. Hans Krebs, therefore called so. तभी उसको हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, ठीक है। First formed compound is citric acid, therefore called as citric acid cycle. First formed compound is citric acid, therefore called citric acid cycle. मैक्सिमम जो कंपाउंड्स हैं वो उसमें 3 कार्बोक्सिल का ग्रुप है। इनिशियली जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर उसमें 3 कार्बोक्सिल के ग्रुप्स होते हैं, तभी हम उसको बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। सो यू कैन राइट इट डाउन। Many intermediates formed during this cycle have 3 carboxyl groups, therefore called as tricarboxylic acid cycle. Tricarboxylic acid cycle. साइट ऑफ अकरेंस, ये साइकिल होती कहां पर है? ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। सो यू कैन राइट इट डाउन। Site of occurrence is mitochondria matrix. Mitochondrial matrix. ये साइकिल कॉमन पाथवे है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन के लिए। So you can also write it down. This cycle serves as common pathway for oxidation or breakdown of carbohydrates, fats and proteins. So now I'm going to draw this cycle for you. So draw it carefully, side by side with me. तो हमें पता है पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन का कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोए में। इस टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन। We know that. एसिटाइल कोए के साथ
कंबाइन करता है oxaloacetic acid, which is a 4-carbon compound. Oxaloacetic acid combines with a 2-carbon acetyl-CoA, 2-carbon acetyl-CoA to form a 6-carbon compound that is called as citric acid. तो citric acid 4 कार्बन का कंपाउंड 2 कार्बन के कंपाउंड के साथ कंबाइन होगा और बन जाएगा 6 कार्बन का कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं citric acid. ठीक है. Now the citric acid gets converted into isocitrate. Isocitrate gets converted into oxalosuccinic acid. Oxalosuccinic acid gets converted into alpha ketoglutaric acid. During the conversion of citric acid के लिए जो enzyme involved है उसका नाम है citrate synthetase. Citrate synthetase के बाद isocitrate बना तो enzyme involved है aconitase. आइसोसिट्रेट के बाद आइसोसिट्रेट भी आपका 6 कार्बन का कंपाउंड है. आइसोसिट्रेट के बाद आपका फिर से 6 कार्बन का कंपाउंड ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बनता है in the presence of enzyme isocitrate dehydrogenase. During this conversion, what happens is there is formation of NADH. NADH बनता है इस कन्वर्जन के टाइम पे. ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड जब कन्वर्ट होते हैं अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में तो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है. तो 6 कार्बन के कंपाउंड से जब एक CO2 रिलीज होगा तो बन जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो एक 5 कार्बन का कंपाउंड है. ये 5 कार्बन का कंपाउंड will get converted into succinyl-CoA. succinyl-CoA. succinyl-CoA एक 4 कार्बन का कंपाउंड है. इस टाइम पे फिर से एक CO2 रिलीज होती है in the presence of enzyme alpha ketoglutarate dehydrogenase. इस टाइम पे फिर से NADH का फॉर्मेशन होता है from NAD+. Succinyl-CoA gets converted into succinic acid in the presence of enzyme succinate thiokinase. Succinate thiokinase. During this conversion, what happens is there is formation of GTP. GTP stands for guanine triphosphate. Just like ATP, ATP बोलते हैं हम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, GTP हम बोलते हैं guanine ट्राइफॉस्फेट को. वो बनता है GTP से. ठीक है. Succinic acid gets converted into fumaric acid. Succinic acid भी 4 कार्बन का कंपाउंड है. फ्यूमेरिक एसिड भी 4 कार्बन का कंपाउंड है. फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में और मैलिक एसिड कन्वर्ट होता है ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में. सक्सिनिक एसिड जब फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है वो होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज. जब फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो एंजाइम इन्वॉल्व इज फ्यूमरेज. ठीक है. और जब मैलिक एसिड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है एंजाइम इन्वॉल्व इज मैलिक डिहाइड्रोजनेज. और ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन जब सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है तो FAD कन्वर्ट होता है FADH2 में, FADH2 में. और जब मैलिक एसिड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है तब NAD कन्वर्ट होता है NADH में. ठीक है.
सो इस पूरी साइकिल के अंदर अगर आप देखो 1 2 एंड 3 तीन आपके बन जाते हैं NADH, एक बनता है FADH और एक बनता है GDP. Sorry. So just to differentiate, यहाँ पे देखिए these are the enzymes involved. So I've just highlighted the enzymes with yellow color. Wherever energy is produced, वहां पे मैं आपको highlight कर रही हूँ. ठीक है, जहां जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, that is highlighted with green color. So this is whole is Krebs cycle. This whole is Krebs cycle. So एक ग्लूकोज से बनते हैं दो पायरुवेट, एक पायरुवेट से एक क्रेब्स साइकिल होगी, तो दो पायरुवेट से कितनी क्रेब्स साइकिल होगी? दो. So per glucose दो Krebs cycle required है. So we will just discuss the energy balance or summary for the Krebs cycle. Summary में देखो, 1 ग्लूकोज के लिए दो पायरुवेट बने, एक पायरुवेट से एक Krebs cycle होती है, तो दो पायरुवेट से होंगी दो Krebs cycle. So now 1 पायरुवेट से पहले बना 1 एसिटाइल कोए, 1 एसिटाइल कोए वाया लिंक रिएक्शन. इस टाइम पे कितनी 1 NADH प्रोड्यूस. 1 Krebs cycle में 1 Krebs cycle में we have 3 NADH, 1 FADH2 and 1 GDP produced. If I'll talk about for 1 glucose, एक ग्लूकोज से दो पायरुवेट बनते हैं, सो 2 लिंक रिएक्शन होंगे एंड 2 Krebs साइकिल होंगे. ठीक है, तो 2 लिंक रिएक्शन होंगे और 2 Krebs साइकिल होंगी. तो NADH जो लिंक रिएक्शन में एक ग्लूकोज के लिए प्रोड्यूस होंगे वो होंगे 2, और Krebs साइकिल अगर आप Krebs साइकिल की बात करते हो तो for 1 glucose this will everything would be multiplied with 2. Everything would be multiplied with 2. तो आपके पास 6 NADH, 2 FADH2 और 2 GDP बनेंगे for 1 of glucose, that is complete oxidation of 1 glucose via Krebs cycle. ठीक है, so this was all what we have to discuss today. In the next class हम पूरा energy balance sheet करेंगे, glycolysis link reaction और Krebs cycle का. Along with that we are going to refer about ETS, कि कैसे जो NADH और FADH2 बने हैं since glycolysis in link reaction and in your Krebs cycle, वो कैसे ATP में convert होते हैं.
So we are going to discuss that very important cycle in the next class. Bye bye. Till then, stay safe and study well.